Hello, everyone. Good morning. I welcome you back to SSBCrack Exam, and we are in the new topic today. We are going to start with a new topic today for your CDS 1 2022 examination, which is on 10th of April, right? I hope that all of you have been going through all our live classes, which have been taking place for a very long time for all these days, and we have already covered in English all the important topics from where the questions do come for your CDS exam. That is spotting of errors, antonyms, synonyms, idioms and phrases, and fill in the blanks. Right. So today we are going to take up with this new topic called close test, which is also sometimes called close comprehension or close composition. Now, what are the types of questions that come from here? Now, close test and fill in the blanks, they are more or less the same thing. The only difference is that in fill in the blanks, you get only one sentence with one blank, where you have to find out the appropriate word to fill up the blank. In close test, what happens? A passage is given to you. You have to read the passage, and then for each blank, there will be blanks in the passages. For each blank in the passage, there will be options given. So you have to choose the correct option, fill in the blank of the passage, and therefore complete the passage meaningfully. So this is the only difference. It is sometimes considered to be a bit more difficult than fill in the blanks question, but again, it needs a lot of practice, and so we are here. Good morning, Neeraj, Shankar. ओके दिव्या, अनिश, मानसी, अनिरुद्ध, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ गाइस अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं. ओके, थैंक यू. अनिरुद्ध ऑलरेडी नोज दैट व्हाट आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Thank you so much for the confirmation. Okay, that's very good to know that I'm audible and visible to all of you. Okay, guys. So let's start with today's class now. आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को या शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए इस पर्टिकुलर सेशन को. ठीक है. तो अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हो, यू मस्ट नो अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम, बिकॉज वी आर इंडियाज नंबर 1 पोर्टल फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, है ना. तो कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और इस ऐप के अंदर आपको डिफेंस एग्जाम्स के रिलेटेड सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें रहेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी नोट्स एज पर दी एग्जाम्स अपडेटेड सिलेबस, और ये दोनों चीजें भी आपको ऑफलाइन मोड में भी एक्सेसिबल होगा. मॉक टेस्ट भी हमने प्रोवाइड किए हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस और अच्छे से बूस्ट हो सके अलॉन्ग विथ योर कॉन्फिडेंस. और मॉक टेस्ट के आंसर सबमिट करने के बाद आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलती है, जो एक स्मार्ट एनालिटिक रिपोर्ट के थ्रू मिलता है आपको. ठीक है. स्टडी प्लान्स भी हम प्रोवाइड किए हैं, तो जो लोग सीडीएस 2 2022 या फिर नेक्स्ट ईयर सीडीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो ये स्टडी प्लान्स फॉलो कर सकते हैं. और सिर्फ सीडीएस एग्जाम ही नहीं, बाकी कोई भी डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड अगर आप कोर्सेज ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको उसके रिलेटिवली स्टडी प्लान्स जो है वो मिल जाएंगे. लाइव क्लासेस ऑब्वियसली हमारे चैनल पे चलती आ रही है, आप देख सकते हैं. हम ऑब्वियसली यू आर टेकिंग पार्ट टू ऑल द लाइव क्लासेस. और मैं ये बता देती हूँ कि सीडीएस 1 2022 और एनडीए 1 2022 दोनों एग्जाम्स ही सेम डेट पे है, विच इज ऑन 10th of April. इसलिए सीडीएस 1 2022 के सारे लाइव क्लासेस सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, एंड एनडीए 1 2022 के लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है 4 PM ऑनवर्ड्स. सो आई होप कि ये टाइमिंग्स आपको याद है. अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई होगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेस है हमारे पास. तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, यू कैन टेक आवर सीरियस एग्जाम ऑनलाइन कोर्स 2022 और सीरियस ओटी एग्जाम ऑनलाइन कोर्स 2022. और इफ यूर एन एनडीए एस्पिरेंट ऑल्सो, यू कैन टेक आवर एनडीए एग्जाम ऑनलाइन कोर्स. इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे टॉप सेलिंग कोर्सेस है हमारे पास, जैसे एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस, एसीसी एंड सो ऑन. बाकी कोर्सेज आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएंगे. हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है, जो कि मॉक टेस्ट सेट्स है, और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है अपने एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिएगा. अलग अलग से सीडीएस और सीडीएस ओटीए के लिए टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा. व्हेन यू आर गेटिंग योरसेल्फ एनरोल टू एनी कोर्स और टेस्ट सीरीज, ये कोड आप यूज कर सकते हैं Warrior10. इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स या टेस्ट सीरीज पे. तो ये था हमारे बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, विच इज ऑन क्लोज टेस्ट और क्लोज कॉम्पोजिशन. डायरेक्शंस कुछ इस तरह आपको दिए जाएंगे. आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है, वो है कि किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं, बी इट फॉर एनडीए और सीडीएस, हर एक इंग्लिश के क्वेश्चन में हर एक टॉपिक का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे डायरेक्शंस दिए रहते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं. प्लीज रीड द डायरेक्शंस केयरफुली बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, तो ये डायरेक्शंस फटाफट से आप लोग पढ़ लीजिए.
So each of the following sentences in this section has a blank space with 4 words or group of words given. Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, उसके बाद हम लोग जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे. लास्टली आई विल गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन टू सॉल्व. ठीक है, एक पैसेज दूंगी मैं, होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, उसको आपको सॉल्व करना है. क्लियर एवरीवन? तो हर एक ब्लैंक के लिए जो ऑप्शंस मिलेंगे उसके लिए आपको 20 सेकंड्स दिया जाएगा, जिससे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है और चूज करना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. पहले मैं आपको पैसेज दिखाऊंगी विदाउट एनी ऑप्शंस. ओके, सो यू हैव टू रीड द एंटायर पैसेज अलोंग विद द ब्लैंक्स, और ऐसा आपको एक्चुअल एग्जाम में भी करना है. सो यू कैन सी हियर, दिस इज द पैसेज ऑन योर स्क्रीन. This is a passage which came in Series 2 2021 for your closed test question. Everybody please read the entire passage carefully first, and then we will look into the options, okay? The polythene bags dash non-biodegradable. That is, they cannot be decomposed dash microorganisms into manure. They remain as dash even after years. Animals that started eating waste food dash with these polythene bags ultimately started dying dash their internal system was getting blocked. The government had no alternative dash to ban these polythene bags. It is dash duty of the government to look into this matter. However, it is also the duty of each individual to dash that we dash use polythene bags. By using these, we will not only harm the environment but ourselves as well. Thus, say no to plastic bags and contribute dash society. तो यहाँ पे आप लोग guess कर सकते हैं कि पैसेज किसके ऊपर है? The use of polythene bags which is affecting the environment around us. Okay, the different disadvantages, the health hazards of using polythene bags or plastic. Right? चलिए start करते हैं. Guys, if you are here to have these conversations amongst yourselves and you're getting distracted, not attending the class because you want to practice questions, you can excuse yourself from the class, because I don't want everyone to get distracted and also distract others as well who are here to practice. Okay, these are serious classes. कभी कभी yes हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती कर लेते हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग थोड़ा हो जाता है, सबको इंटरेस्ट भी लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं that you people will be chatting here. Okay, द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कर लो. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लैंक से. दिस इज द ऑप्शंस यू कैन सी फॉर द फर्स्ट ब्लैंक. टाइमर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. द पॉलिथीन बैग्स डैश नॉन बायोडिग्रेडेबल. द पॉलिथीन बैग्स आर, बिकम, इज और वर नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्या होगा इसका आंसर फटाफट से? ओके, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट टेंस में है, द वर्ब विल बी आर. Okay, because also it is plural in number. It is not one bag, it is bags. So the polythene bags are non-biodegradable. Okay, so option A will be your correct answer. Moving on to the next blank. That is, they cannot be decomposed dash microorganisms into manure. They cannot be decomposed by, through, into or in microorganisms into manure. Now these polythene bags or whatever it is which are biodegradable, they are easily decomposed. And what helps in decomposition? Microorganisms which help in decomposition by converting the biodegradable substances into manure. So what is to preposition to use here? It will be by. Option A will be your answer. They cannot be decomposed by microorganisms into manure. Right? Very good everyone. So by will be your answer. Option A. Moving to the third blank. They remain as dash even after years. They remain as they are, as it is, as even, as after, even after years. Okay, the correct answer will be option A. They remain as they are. वो जैसे है वैसा ही रहते हैं even after years. बहुत सालों के बाद भी. Simply because they cannot be degradable. They are not degradable. They are not non-biodegradable, right? So they remain as they are. क्योंकि यहाँ पे subject plural है, therefore यहाँ पे हम लोग same
प्लूरल सब्जेक्ट्स ही यूज करेंगे. दे रिमेन एज दे आर इवन आफ्टर ईयर्स. ओके, एज इट इज नहीं होगा. वी यूजली यूज दिस एज इट इज, वो रह गया है ऐसा. ठीक है, हम बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में. यस, वी कुड हैव यूज्ड एज इट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके साथ आप एज इट इज यूज कर सकते हैं. क्लियर. लेकिन जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे वहां पे एज दे आर और एज वी आर, ओके, वगैरह वगैरह, जो आपका सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे यूज करना है एज के बाद. क्लियर. सो यहाँ पे इट इज नहीं होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट हियर. इट शुड बी प्लूरल ऑल्सो, एज दे आर. ऑप्शन ए इज योर आंसर. Next blank for fourth blank. Animals that started eating waste food dash with these polythene bags ultimately started dying. Animals that started eating waste food besides with these polythene bags, beside with these polythene bags, thorough with these polythene bags, or along with these polythene bags. What is the most appropriate word to use here? Very good, Sachin. It will be option D, along with these polythene bags. So along with is used successively, one after the other. ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे along use करेंगे. Animals that started eating food along with these polythene bags. ठीक है, पॉलिथीन बैग्स के साथ साथ जो वेस्ट फूड खा रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं. अल्टीमेटली स्टार्टेड डाइंग. सो हियर कम्स नाउ द ऑप्शंस फॉर द फिफ्थ ब्लैंक. Animals that started eating waste food along with these polythene bags ultimately started dying. Dash their internal system was getting blocked. Ultimately started dying of their internal system was getting blocked. Though their internal system was getting blocked, because their internal system was getting blocked, or for their internal system was getting blocked. Very good, Neeraj. Yes, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा. बिकॉज देयर इंटरनल सिस्टम वाज गेटिंग ब्लॉक्ड. क्यों यहाँ पे बिकॉज हो रहा है? बिकॉज इज यूज्ड इन phrases as clauses also. as you all know, coordinate clauses की तरह because का इस्तेमाल होता है as coordinating conjunction when two separate or two main clauses are joined. और main clause क्या होता है? जहाँ पे subject और verb और उसके साथ object भी रहता है. यहाँ पे देखो subject क्या है? their internal system, verb is was getting blocked. okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेन क्लॉज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं बिकॉज. Now, moving on to the sixth blank now. The government had no alternative dash to ban these polythene bags. The government had no alternative yet to ban these polythene bags, but to ban these polythene bags, so to ban these polythene bags, or because to ban these polythene bags. Very simple. क्या होगा? उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था क्या करने के सिवा? पॉलिथीन बैग्स को बैन करने के सिवा. सो देयरफॉर द करेक्ट वर्ड टू यूज हियर इज बट टू बैन. वेरी गुड. येट नहीं, बट टू बैन दिस पॉलिथीन बैग्स. येट का यूज कब होता है? कुछ होने के बावजूद भी अगर कुछ और होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, मतलब गरीब होने के बावजूद भी वो ऑनेस्ट है. ही इज नॉट डूइंग समथिंग टू अर्न मनी, ओके, जस्ट बिकॉज ही इज पुअर. सो ऑल्दो येट का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई दो ऑपोजिट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट नहीं, यहाँ पे कारण के बारे में बात चल रही है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था बट टू बैन दिस पॉलिथीन बैग्स. तो बट का इस्तेमाल होगा. ठीक है, ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फॉर द सेवेंथ ब्लैंक. It is dash duty of the government to look into this matter. It is but also duty of the government to look into this matter. It is still duty of the government to look into this matter. It is the duty of the government to look into this matter. Or it is yet duty of the government to look into this matter. What will be the answer? Very good, Vladimir. The answer will be option C. It is the duty of the government to look into this matter. ये government का ही duty है इस चीज का ध्यान रखने के लिए. However, now comes the eighth blank. So here it is answer C. Okay, everyone? Everyone is giving the correct answer only. Moving on to the eighth blank now.
However, it is also the duty of each individual to dash that we dash use polythene bags. It is also the duty of each individual to get it that, to do it that, to convene it that, to see to it that. Very good. Yes, absolutely, Sachin. It will be option D. It is also the duty of each individual to see to it that. See to it matlab check. To check. गवर्नमेंट का तो ड्यूटी है ही इस पर्टिकुलर मैटर का ध्यान रखने के लिए, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का भी ये ड्यूटी है टू सी टू इट, चेक करने का. क्या चेक करने का? मूविंग ऑन टू द 9th ब्लैंक. That we dash use polythene bags, that we didn't use polythene bags, that we weren't use polythene bags, that we don't use polythene bags, or that we aren't use polythene bags. So you have to find out the correct verb. Okay, the answer is option C. ये काफी इजी था. दैट वी डू नॉट यूज और डोंट यूज पॉलिथीन बैग्स, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज ही प्रेजेंट टेंस में है. वी आर गोइंग टू टेक प्रेजेंट टेंस और वी के बाद क्या आता है? डोंट आता है. वी डोंट यूज, वी डोंट डू समथिंग. व्हाट इज दैट? वी डोंट यूज पॉलिथीन बैग. सो डोंट विल बी योर आंसर. वेरी गुड एवरीवन. ऑप्शन सी इज योर आंसर. मूविंग ऑन नाउ टू द 10th blank, 10th question. By using these, we will not only harm the environment but also but ourselves as well. Thus, say no to plastic bags and contribute dash society. तो आपको यहाँ पे appropriate preposition choose करना है for contribute. And contribute by society, contribute to society, contribute into society, contribute in society. Find out the appropriate preposition to use with contribute. Contribute के साथ कौन सा preposition use होता है guys? You contribute to something, to society, है ना? तो contribute के बाद जो appropriate preposition आता है वो है to. Therefore your answer is option B. Very good. Anish, Priya, Davis, very good. शंकर, शौर्य. ओके, ऑप्शन आपका बी हैगा. फटाफट से मार्क कर लीजिए आपने आपको कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप करेक्टली आंसर किए हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव करेक्टली आंसर्ड इन दीज 10 क्वेश्चंस नाउ. ओके, राइट. सो दिस वाज आवर फर्स्ट पैसेज. अगर आप बीच में ज्वाइन किए हो, जब वी वर सॉल्विंग दिस फर्स्ट पैसेज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व बिकॉज यू जॉइंड इन मिडल, डू नॉट वरी. वी आर कमिंग अप नाउ विद द नेक्स्ट पैसेज. सो इफ यू हैव नॉट जॉइंड येट, नाउ इज द टाइम टू जॉइन गाइज. जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, ठीक है. हम लोग यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट से, उसके बाद जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे. व्हाइल यू आर आल्सो जॉइनिंग, डू नॉट फॉरगेट टू फर्स्ट लाइक द सेशन एंड शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल. ओके, तो ये था सीरीज 2 2020 का क्वेश्चन. अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले हम बढ़े, let me also show you that we have a course called CDS Exam Online Course 2022, especially for those of you who are preparing for CDS 2 2022 exam, or for that matter next year CDS exam. आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल हो सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद. इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे CDS एग्जाम के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, एज वेल एज PDF स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस, सैम्पल प्रैक्टिस, Q&A, प्रीवियस ईयर्स Q&A, practice sets and much more. So start your preparation for today and do your best, perform the very best in the actual CDS exam. Okay guys, so now it's the time for the next passage. So everyone, we will read the passage. Very good guys, you have all scored 10 out of 10. Okay, Akash and Shankar scored 8 out of 10. Okay, that is also very good. 9 out of 10, Priya, very good. Okay, Neeraj ka exam में 10 में 8 था. That is very good actually. Okay guys, now we are coming to the next passage. Now this is from CDS 1 2021. ठीक है, पैसेज पहले पढ़ लेते हैं along with the blanks, उसके बाद ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे. It sounds like dash great idea. People getting instantly excited when they hear dash phrase education for peace, or the title of a course that calls itself Peace Education. About a decade ago, I proposed such dash course in my institute. The idea of a course dash Peace Education had occurred to me on the way back from one of the neighboring countries where I met students of class 9. I could not find dash difference dash Indian students and their counterparts in the other country on peace dash living together. It made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like grass dash trees. The arguments and stances children took demonstrated dash peace comes from understanding a conflict well, not necessarily dash solving it. Okay, so here the author is talking about
the peace education or education for peace. Okay, how it is contributing, how it is not different from other countries. Okay guys, so now we are going to start with one by one. The first blank, so this is the options, these are the options for the first blank. It sounds like dash great idea. It sounds like an great idea, and the great idea, some great idea. Okay, one of them should be, just a minute guys, it should be a. Okay, option B should be a. It sounds like an great idea, a great idea, the great idea, some great idea. Obviously, very easy question this was. The answer will be option. Okay, I just messed it up, I guess. It should be A in A and B should be an. Okay, so that is why A should be your option. It's like quite confusing, I know. But it should be, it sounds like a great idea. Okay, please. I know, like a great idea. Very good, Sachin. Yes. So थोड़ा सा confusion है options में. It was a printing mistake. I'm so sorry, guys. तो option A था आपका only a, B में था an, C में था the और D में था some. ठीक है, तो आपका option होगा, आपका आंसर होगा option A. It sounds like a great idea. क्योंकि great है ना, consonant यहाँ पे हम लोग an use नहीं करेंगे, the भी नहीं करेंगे, some भी use नहीं करेंगे. Okay. So option A will be your correct answer. Moving to the next question, next blank, which is the second blank. People getting instantly excited when they hear dash phrase education for peace. When they hear a phrase, when they hear the phrase, when they hear that phrase, when they hear some phrase. Excuse me, guys. Now, the phrase has already been mentioned, which is education for peace. So, therefore, the correct article to use here will be option B. The phrase. Very good. Yes. When they hear the phrase, and what is it? Education for peace. You can see education for peace has been put inside single, inverted commas inside the quotes. Education for peace. So, already the phrase has been mentioned. So, it's not any random phrase. So, you cannot use a or that or some. It should be the phrase because it has already been mentioned particularly, right? Moving on to the third blank. About a decade ago, I proposed such dash course in my institute. About a decade ago, I proposed such any course in my institute, such the course in my institute, such some course in my institute, such a course in my institute. What will be the correct option? I proposed. After such, the article to use is such a course. है ना, such के बाद तो आ ही आता है. Such a man, such a girl, such a scenery, okay, such an item, such a beauty. Here it should be such a course. Okay, so such के बाद क्या आएगा? So option D will be your answer. Next one, the fourth blank now. The idea of a course dash peace education had occurred to me. The idea of a course to peace education, the idea of a course in peace education, the idea of a course for peace education, the idea of a course on peace education. What will be the correct preposition to use? अगर आप किसी सब्जेक्ट पे कोर्स करना चाह रहे हैं, then what is the preposition you use? You go for a course on something, right? So the correct preposition should be on. So you can do a course on hospitality management, or on hotel management, or on English literature, or on career management, whatever. Okay, so course के बाद जो preposition आता है, so if you want to do a course on something, on a particular subject, so the preposition on should come after course. Okay, so option D will be a correct answer. Next one, fifth blank के लिए, I could not find dash difference. I could not find any difference, the difference, that difference, this difference. यहाँ पे negative use हो रहा है. Could not find. मुझे difference नहीं मिला. तो क्या होगा? Any difference, the difference, that difference, this difference. बहुत easy है ये. नहीं यूज होता. वो क्या होता है ना सचिन, इट्स अ appropriate preposition. You do a course on a particular subject or on a particular topic. Okay,
यस, वेरी गुड गाइस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। आपको जैसे पता है आई डोंट हैव एनी मनी, सो व्हेनेवर यूजिंग नेगेटिव आप एनी यूज करते हैं, है ना। सम यूज करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव। ओके, आई हैव सम मनी, बट इफ यू से कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, यू से आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सिमिलरली आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, मुझे कोई फर्क ही नहीं दिखा, है ना। So any will be a correct answer, which is option A. Moving on to the sixth blank now. I could not find any difference dash Indian students and their counterparts in the other country. So difference with Indian students and their counterparts in other country, difference between Indian students and their counterparts in the other country, difference among Indian students and their counterparts in the other country, or difference to Indian students and their counterparts in the other country. Yes, absolutely. Jatin, Sachin, yes. So, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों के बीच में का डिफरेंस हो रहा है, दैट इज बिटवीन द इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटरपार्ट्स इन द अदर कंट्री, वी आर गोइंग टू यूज बिटवीन हियर, ऑप्शन बी। ठीक है, अमंग नहीं होगा। देखो प्रतीक्षा, अगर इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर होता, ठीक है, तो हम लोग अमंग यूज करते, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट कैटेगरीज है। एक है इंडियन स्टूडेंट का कैटेगरी, एक है उनके काउंटर पार्ट्स इन अदर कंट्री का कैटेगरी। ठीक है, दो अलग अलग चीज है, एक है इंडियन स्टूडेंट्स, एक है स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो क्योंकि दोनों चीज के बीच का डिफरेंस के बारे में बात हो रही है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज बिटवीन। ठीक है, सो बिटवीन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now, moving on to the next blank, which is the seventh blank here. I could not find any difference between Indian students and their counterparts in the other country on peace dash living together. On what? On peace with living together, on peace and living together, on peace because living together, on peace but living together. क्या होगा डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स और काउंटर पार्ट्स जो होते हैं अंदर अदर कंट्रीज में, उनके बीच का डिफरेंस नहीं ढूंढने को मिला उनको। ऑन व्हाट? ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा, विथ नहीं होगा। वेरी गुड गगन, इट शुड बी ऑप्शन बी, ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर। शांति और एक साथ रहने के ऊपर का जो डिफरेंस है वो, ठीक है, ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द एट्थ ब्लैंक नाउ. It made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like grass dash trees. Like grass or trees, like grass with trees, like grass for trees, like grass some trees. तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट के साथ, लड़ाई के साथ रहना सीख जाए तो उनका लाइफ कैसा ग्रो करेंगे? जैसे ग्रास ग्रो करता है विथ ट्रीज के साथ, बिकॉज ट्रीज इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर प्लांट, राइट। ग्रास क्या है? बहुत छोटा छोटा प्लांट से बहुत छोटा छोटा लीव्स होते हैं, है ना, कोई भी उसके ऊपर से चला जा सकता है, बट यू कैन नॉट जस्ट ट्रेड ऑन सम ट्रीज, राइट। सो ट्रीज इज बिगर, stronger. Similarly, conflict is also bigger or stronger in our lives, and if we can live with a big thing like conflict, we can also, it should be like living like a grass with trees. जैसे grass trees के साथ जीते हैं, वैसे the author is comparing us to live with the conflict in our life. Okay, so option B will be your correct answer. Moving on to the ninth question, the ninth blank. The arguments and stances children took demonstrated dash, demonstrated for, demonstrated but, demonstrated that, demonstrated when. बच्चे जो आर्ग्यूमेंट्स और स्टांसेस लेते हैं अपनों में, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो क्या दिखाते हैं? वेरी गुड व्लादिमीर, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ये दिखाता है, क्या दिखाता है? सो डेमोन्स्ट्रेटेड के बाद दैट आता आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट वेल। अच्छे से अगर आप लड़ाई को समझोगे तो आपको शांति भी समझ में आ जाएगी। नॉट नेसेसरली, एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर द 10th ब्लैंक, नॉट नेसेसरली डैश सॉल्विंग इट, नॉट नेसेसरली बाय सॉल्विंग इट, विथ सॉल्विंग इट, टू सॉल्विंग इट, फॉर सॉल्विंग इट। Not necessarily
What will be the answer? By solving it. ठीक है, सॉल्व करने से पीस नहीं आता, एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने से शांति नहीं आएगी, उसको समझने में शांति आएगी, है ना. सो it demonstrated that peace comes from understanding a conflict well, not necessarily by solving it, है ना. So by will be your correct answer. Very good, Anish, Jatin. Okay, so option A will be your correct answer. Quickly mark yourselves now, guys, how many questions you have correctly answered for this particular passage, and we will quickly move on to the next one. Everyone, mark yourselves how many questions you have correctly answered. Very good, Lieutenant. 9 out of 10. That's really good job. Others? और अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे ये सोच के बीच में ज्वाइन किए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, इफ यू स्टिल लेट, नो वरीज, वी आर कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तीसरा पैसेज लेके आ रहे हैं, तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लो और लाइक कर लो सेशन को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है शेयर कर दो. ओके, राइट. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, Muskan is 10 out of 10. Very good. Sachin, 8 out of 10. Absolutely good. That's fine. 8 to 9 is good only in closed test. Okay. Right. So before we move on to the next passage, let me also show you we have a course called SSB Interview Online Course, which is a course which will help you to prepare for SSB interview. जैसे आपको पता है कि रिटन एग्जाम ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपको SSB इंटरव्यू की तैयारी करना होता है, और जैसे आपको सबको पता है कि इंडिया का सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू है SSB इंटरव्यू, तो इसके लिए प्रिपरेशन भी आपको टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ज़रूरत होती है. तो इसके लिए आप हमारे कोर्सेज पे एनरोल्ड हो जाइएगा आफ्टर टेकिंग योर CDS 1 2022 एग्जाम. In this course, you will find all the testing procedures of SSB interview being in detailed explained to you in full-fledged lectures, study materials, as well as practice sets. Not only that, we also organize SSB interview live classes every day and in monthly batches. So please be a part of these live interactive classes where we hands-on make you practice on the different testing procedures of SSB interview and even solve all your doubts and queries on the same. Okay? Right. So now we are going to move on to the next passage. तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं the entire passage with the blanks. A very interesting one. Let's read. One of the most interesting new books published recently is Spaceship by Professor E.C. Walker. Our Earth, he says, dash like a spaceship, and all the 400 million people dash Earth are passengers on it, and we are heading dash a disaster. The levels of atmospheric pollution dash in the cities and industrial areas of the world could in time change the weather patterns of the Earth, raising the temperature dash the whole planet. If this rose a few dash, the deserts of the world would expand to double their size. The polar ice caps would start melting. If the polar ice caps melted, the dash level all over the world would rise dash about 60 meters. Professor Walker's dash is not at all about gloom and doom. He admits that the dash he describes could take thousands of years. So here a book called Spaceship by Professor E.C. Walker has been described in length. It's talking about what are all there talked of in this particular book. Okay, especially about the way that we are, going towards a catastrophe. Now, we are going to first start with the first blank that we have here. So these are the options for the first blank. Our Earth, he says, dash like a spaceship. Our Earth, he says, is like a spaceship, have been like a spaceship, will be like a spaceship, should be like a spaceship. Okay, now because the entire passage is in present tense, so it should be also, the verb should also be in present tense form. So it should be option A. Our Earth, he says, is like a spaceship. हमारा जो अर्थ है वो एक स्पेसशिप की तरह है. Now we will move on to the second blank. And all the 400 million people dash Earth are passengers on it. और जितने भी सारे लोग हैं, 400 मिलियन लोग जो है इस धरती पे, वो उस स्पेसशिप का पैसेंजर्स है. So what will it be? All the 400 million people over Earth, on Earth, upon Earth, with Earth. Very good, Jatin. It will be on Earth. इस धरती पे जो 400 मिलियन लोग हैं, so 400 million people on Earth. So on will be your correct preposition, right? So option B is your answer. Third blank now. And we are heading dash a disaster. And we are heading about a disaster.
and we are heading to a disaster, and we are heading towards a disaster, and we are heading on a disaster. हम लोग एक disaster, एक catastrophe के सामने के तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे preposition? We are heading. Very good, Vladimir. Absolutely. Shaurya, Anish. We are heading towards a disaster. हम लोग एक disaster के तरफ जा रहे हैं, because we're moving towards is the correct preposition to use. Okay, so option C is your answer. Lovely. Moving on to the fourth blank here now. The levels of atmospheric pollution dash in the cities and industrial areas of the world could in time change the weather patterns of the earth. The levels of atmospheric pollution increasing in the cities and industrial areas, arriving in the cities and industrial areas, coming in the cities and industrial areas, decreasing in the cities and industrial areas. ये तो बहुत सिंपल है. सबको पता है कि सिटीज और इंडस्ट्रियल एरियाज में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है. सो द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग, है ना. द लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंक्रीजिंग इन द सिटीज. वो अराइव भी नहीं किया है, वो आ भी नहीं रहा है, वो ऑलरेडी आ चुका और वो बढ़ना भी स्टार्ट हो चुका है ना. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. रेजिंग द टेम्परेचर डैश द होल प्लैनेट. तो ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है सिटीज और इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो वेदर पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं हमारे अर्थ का, और वो क्या कर रहा है, रेजिंग द टेम्परेचर डैश द होल प्लैनेट. रेजिंग द टेम्परेचर इन द होल प्लैनेट, ऑफ द होल प्लैनेट, फॉर द होल प्लैनेट और टू द होल प्लैनेट. व्हाट इज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू यूज? ये किस टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है? हमारे पूरे पृथ्वी की टेम्परेचर के बारे में. दैट इज व्हाई द करेक्ट प्रीपोजिशन शुड बी ऑफ. टेम्परेचर ऑफ द होल प्लैनेट. एब्सोल्युटली, काफी इजी है ये, आई थिंक पैसेज, है ना. टेम्परेचर ऑफ द होल प्लैनेट. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ ब्लैंक. क्लियर? मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ ब्लैंक नाउ. If this rose a few dash, the deserts of the world would expand to double their size. अभी deserts का जो size है पूरे world में वो double हो जाएगा अगर ये बढ़ जाए. क्या बढ़ जाए? ये temperature, the temperature of the whole planet. If this rose a few dash, तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सा units हम लोग use करते हैं for temperature? Degrees, steps, miles और inches? Very good. Absolutely. If this rose a few degrees, अगर ये बढ़ जाए कुछ डिग्री, तो हमारे पूरे वर्ल्ड का जो डेजर्ट्स है वो अपनी साइज दुगना कर देंगे, है ना. The polar ice caps would start melting. पोल्स में जो आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा. और उससे क्या होगा? सेवेंथ वाले ब्लैंक पे आते हैं. If the polar ice caps melted, अगर polar ice caps melt होना स्टार्ट किया, the dash level all over the world would rise. The water level, the ice level, the sea level or the desert level. क्या होगा बताओ जल्दी से. अगर ग्लेशियर्स मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? What will increase? What will rise all over the world? The sea level. Water level नहीं होता, sea level होता है ना. Water कहाँ से आएगा आपको? किस चीज का वाटर? वाटर बॉटल का? नो. सी, ओशंस, रिवर्स. तो सी लेवल राइज होना स्टार्ट करेगा. ठीक है, सी लेवल राइज होना स्टार्ट करेगा. सो ऑप्शन सी. वाटर लेवल नहीं, सी लेवल. गाइस, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है. ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड, जनरलाइज नहीं, स्पेसिफिक वर्ड आपको चूज करना है. द सी लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड इंक्रीज. वाटर लेवल, वाटर कहाँ पे है? सीज में है, तो सी लेवल होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. ठीक है, ऑप्शन सी. The sea level all over the world would rise. And now comes the eighth blank. In about 60 meters, by about 60 meters, to about 60 meters or with about 60 meters. बताओ. rise के बाद कौन सा preposition यूज होता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, I think. The sea level all over the world would rise in about 20 meters, by about 60 meters, sorry, to about 60 meters or with about 60 meters. Yes, absolutely, by होगा, क्योंकि 60 meters तक नहीं बढ़ रहे हैं. आप 2 यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 यूज करेंगे तो आप लिमिट बता रहे हो कि 60 meters तक राइज कर रहा है. नहीं, 60 meters और राइज करेंगे, मतलब जो सी लेवल है वो अब 60 meters तो नहीं हो सकता ना, उससे ज्यादा ही होगा सी लेवल पूरे वर्ल्ड में, है ना. तो सी लेवल जितना है
उससे 60 मीटर्स और राइज करेगा. सो बाई विल बी द करेक्ट preposition. अगर आप टू बोल देते हो तो इसका मतलब ये रहता है कि वो 60 मीटर्स तक राइज करेगा, पर नहीं, वट एवर लेवल द सी इज एट नाउ, it will again rise by 60 meters. Okay, so by will be your correct answer, option B. Now we come to the ninth blank. Professor Walker's dash is not at all about gloom and doom. Professor Walker's idea, Professor Walker's thought, Professor Walker's book, Professor Walker's poem. बताओ क्या होगा? यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? Look at the first sentence. One of the most interesting new books published recently is Spaceship by Professor E.C. Walker. तो इतने तक जो भी डिस्कशन हो रहा था वो प्रोफेसर वॉकर के किताब के बारे में भी डिस्कशन हो रही थी. तो क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी. प्रोफेसर वॉकर्स का जो किताब है वो सिर्फ ग्लूम और डूम के बारे में नहीं है कि हाँ सिर्फ कुछ डिजास्टर होने वाला है, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता हमारे साथ, हम लोग सब डूब के मर जाने हैं, है ना? नहीं, it's not all about gloom and doom. So option C will be your correct answer. Now we come to the 10th blank. He admits that the dash he describes could take thousands of years. जो भी यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे थे वो हजार साल लग सकता है. ठीक है, अभी और इसी वक्त नहीं आने वाला. तो ये सोच के मत खुश हो जाना कि सीडीएस का एग्जाम ही नहीं होगा 10th of April. ठीक है, क्योंकि सी लेवल जो है वो राइज करने वाला, हम लोग सब डूब जाएंगे. ठीक है, इसमें आज आने में हजारों साल लगेंगे. ओके, सो व्हाट इज दीज दैट ही हैज डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक? द आइडियाज, द सॉल्यूशंस, द चेंजेस, द टारगेट्स. एब्सोल्युटली, ये सारे चेंजेस होने वाले, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने वाला है, वेदर पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं, उसके बाद पोलर आइस कैप्स को मेल्ट होना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको सी लेवल राइज होना पड़ेगा. तो ये सारे क्या है? चेंजेस है, ना ही आइडियाज है, ना ही ये सोल्यूशंस है, एब्सोल्युटली नॉट, ना ही ये टारगेट्स है. ये क्या है? चेंजेस, परिवर्तन, है ना? तो ऑप्शन सी आपका आंसर है. ये इतना घटिया घटिया जोक्स थोड़ा मारना पड़ता है ना, नहीं तो आप लोग क्या है, मन नहीं बैठेगा आपके क्लास में, फिर आप लोग अपने में ही चैटिंग स्टार्ट कर दोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर हो गया. ओके, ऑप्शन सी इज आंसर. चलो बोलो, कितने सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पैसेज से आपने करेक्टली आंसर किया? बहुत इजी पैसेज था आई थिंक, एज कंपेयर टू द लास्ट टू पैसेजेस. दिस इज अ वेरी वेरी इजी पैसेज, राइट? तो आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 तो सबको स्कोर करना ही होगा, एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10. मयंक ओके, हेमंग, शंकर को 8 मिला, नो वरीज. शंकर, you have to practice a bit more. Neeraj 9 out of 10, but 10 out of 10 is like, I think this is what everybody should score, right? Very good. Pratiksha, Sachin, Anirudh, Davis, okay, 9. Mangal, very good. Lieutenant Priya, okay, no worries. Okay, चलो नेक्स्ट वाले जो है उस पे हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सॉरी गाइस. हाँ, तो नेक्स्ट वाले पैसेज की ओर बढ़ेंगे. लास्ट पैसेज होगा हमारे सेशन का, उसके बाद में एक नया पैसेज दूंगी जो आपका होमवर्क के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कोई है जो बीच में ज्वाइन किया है, नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, तो अभी ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट एक ही सही प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, और लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि अगर सीडीएस ओटीए वाले सोच रहे कि सिर्फ सीडीएस के कोर्स है, हमारे बारे में कौन सोचता है? हम सोचते हैं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू स्टूडेंट्स. सो वी ऑल्सो हैव सीडीएस ओटी एग्जाम ऑनलाइन कोर्स 2022 अवेलेबल इनसाइड आवर ऐप. तो अगर आप सीडीएस ओटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, डोंट वरी, प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे. इसमें भी आपको सीडीएस ओटीए में जितने भी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में concept lectures, videos, study materials as well as quizzes, sample practice Q&A, previous years Q&A, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, नॉट ओनली दैट गाइस, ये जो भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं सीडीएस एग्जाम के लिए, नॉट ओनली इंग्लिश बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, इनके सारे पीडीएफ मटेरियल्स आपको हमारे ऐप के थ्रू ही मिलेगा. तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना पड़ेगा, विच इज सॉरी गाइस सीडीएस 1 2022 लाइव क्लास एंड आंसर की के नाम से. ये सेक्शन सीडीएस ओटी एग्जाम ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा और सीडीएस एग्जाम ऑनलाइन कोर्स में भी आपको मिलेगा. इस सेक्शन में आपको सारे लाइव क्लासेस दोबारा देखने का मौका मिलेगा और इन सारे लाइव क्लासेस के साथ उनके रिस्पेक्टिव पीडीएफ मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ओके, right. Now, moving on to the next passage, everyone be ready. We will again read this passage along with the blanks first and then we will take up one blank, okay, each.
What dash happened to them after us? This most dash question continually torments the parents of these dash children. So they are mainly interested in dash some kind of vocational training for them. Dash special schools for such children spread all dash the world, lay emphasis on vocational training. Dash they are taught to make paper bags, dash wall hangings, etc. This of course is quite dash and admirable. But what about play and dash? So up I hope if you have not got what this passage is about, it is about special children. Who are special children? Children who are suffering from autism or who are autistic. Okay, so special children के बारे में यहाँ पे बात चल रही है about their parents and how they are trained in vocational training and so on. So let's start with one by one. The first blank here, and these are the options. What dash happened to them after us? What can happen to them after us? What will happen to them after us? What distracting will happen? What distracting happened to them after us? What has happened to them after us? You have to choose the correct verb. हमारे बाद उनका क्या होगा? So what is the verb? What will happen to them after us, है ना? So option B is your correct answer. हमारे बाद उनका क्या होगा? Now this is a thought by most of the parents of these children. So this most dash question. So now it comes the second blank. This is what kind of question you think? This most dash question continually torments the parents. This most joyous question, distressing question, must question, useless question. Excuse me guys. एब्सोल्युटली ये खुशी वाली क्वेश्चन तो नहीं है. तो कोई अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हो, देन ओनली दे विल आस्क दीज क्वेश्चंस टू देमसेल्व्स. व्हाट विल हैपन टू देम आफ्टर अस? सो दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रेसिंग क्वेश्चन, अ सैड क्वेश्चन, not a joyous, not a must, not an useless question at all. It's a distressing question. So option B is your answer. Moving on to the third blank. This most distressing question continually torments the parents of these dash children, of these unethical children, unnatural children, unfortunate children, or normal children. Now, please remember here we are talking about special children. So, what kind of children they are? Unethical, unnatural, unfortunate, or normal? They are? No, not at all. Unnatural, Vladimir. Very natural. Autistic children are very normal. Very good. They are unfortunate. Bichare. They are unfortunate. They're not lucky. They're unlucky. Not unnatural, Pratiksha. No, never call them unnatural. Okay, they are very much natural. They have nothing to do with being natural, unnatural. They're not unnatural. They're not aliens. They're not abnormal. They're very much normal. They're human beings, but they are unfortunate. Okay, they are not fortunate enough to have the correct natural senses that we human beings have in general. Okay, they are unfortunate because they are lacking in some or the other natural biological processes, right? So unfortunate is your correct answer. Okay, option C. Next wala, fourth blank pe dekho. So they are mainly interested in dash some kind of vocational training for them. यहाँ पे दे का मतलब क्या है? The parents of these children. Okay, so they are mainly interested in providing some kind of vocational training for them, making some kind of vocational training for them, giving some kind of vocational training for them, or receiving some kind of vocational training for them. What is the most appropriate word to use? Vladimir, here they means the parents. Parents को क्यों अपने लिए vocational training receive करने को मिले? Receive is what? Getting. It either should be giving, in other words providing. Giving नहीं होगा यहाँ पे, providing will be more appropriate क्योंकि यहाँ पे एक formal passage के बारे में बात कर रहे हैं. You say we provide, basically it also means to give, but provide is like more formal term to use here. Okay, so they are mainly interested in providing some kind of vocational training for them. ठीक है, parents जो है वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एटलीस्ट कुछ vocational training provide किया जाए. Okay, so option A will be your correct answer.
Next is the fifth blank. Dash special schools for such children, but special schools for such children, yet special schools for such children, hence special schools for such children, instead special schools for such children. ना क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स को बहुत फिक्र होती है उनके फ्यूचर को लेके, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव सम काइंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इसके लिए क्या हुआ, स्पेशल स्कूल्स इन चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, तो दैट इज व्हाई द वर्ड टू यूज हियर इज हेंस, देयरफॉर, है ना, हेंस, हेंस मतलब दस, देयरफॉर, इसीलिए। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहते थे, इसीलिए इन चिल्ड्रंस के लिए, इन बच्चों के लिए जो स्पेशल स्कूल थे, सो दस, देयरफॉर और हेंस विल बी योर करेक्ट आंसर, व्हिच इज ऑप्शन सी। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ ब्लैंक, hence special schools for such children spread all dash the world, spread all above the world, all under the world, all over the world, all below the world। पूरे दुनिया में इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स ने क्या किया, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो बहुत इजी है ना, पूरे दुनिया में है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर हियर, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ले एम्फोसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए, बिकॉज दे थॉट दैट आफ्टर दे हैव डाइड, आफ्टर दे हैव गॉन, द चिल्ड्रन एटलीस्ट कुड अर्न सम मनी बाय doing something if they are learning, if they are going through some vocational training. So therefore the special schools for such children all over the world started laying emphasis on giving vocational training, on providing vocational training to these children. Okay, moving on to the seventh blank, dash they are taught to make paper bags, however they are taught to make paper bags, accordingly they are taught to make paper bags, similarly they are taught to make paper bags, unlikely they are taught to make paper bags। तो पूरे दुनिया में स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, दे स्टार्टेड टीचिंग देम टू मेक पेपर बैग्स। सो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज हियर, वेरी गुड शौर्या, अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार, अकॉर्डिंगली दे आर टॉट टू मेक पेपर बैग्स, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार, they are taught to make paper bags, right? So accordingly will be your correct answer. Very good, option B। Moving on to the eighth blank now, accordingly they are taught to make paper bags, dash wall hangings, etc. What kind of wall hangings? Dubious wall hangings, simple wall hangings, clumsy wall hangings, extra wall hangings. Now they are special children, okay, so what kind of wall hangings they are capable to make, or they are able to make? Dubious is when you're not sure, okay, pretentious, so they will make absolutely mangal simple wall hangings, because they are special children, so they are also taught to make simple wall hangings, absolutely, option B is your answer। Moving to the ninth blank, this of course is quite dash and admirable, this of course is quite agreeable and admirable, astute and admirable, additional and admirable, futile and admirable। What word will match here with the word admirable? Okay, it should be very good, option A, agreeable and admirable, ठीक है, agreeable and admirable। Now here if you see you cannot use astute, which means shrewd, क्योंकि बच्चे हैं, special children हैं, they cannot be shrewd। Additional is extra, again it has not relevance here। Futile means useless, again it cannot be useless, because they know how they are taught how to make very simple things, okay, they are being given some vocational training, so this of course is quite agreeable and admirable, okay, so everyone agreed on it and everyone admired this particular initiative by all the special schools over the world, so option A will be your correct answer। Moving to the last question, but what about play and dash, but what about play and sport, play and game, play and grounds, play and fights? वोकेशनल ट्रेनिंग तो दे दिया, अब खेल कूद का क्या, तो क्या कौन सा वर्ड यहाँ पे जाएगा, विच विल मैच विद द वर्ड प्ले, प्ले एंड स्पोर्ट, प्ले एंड गेम, प्ले एंड ग्राउंड्स, प्ले एंड फाइट्स?
एस्ट्यूट का मतलब है shrewd. If you're very sharp, very shrewd. Yes, certain. Futile is a negative word. Okay, so it should be the formal term which we call a play, a game, which is sports. So option A, very good. Shaurya, Priya. Yes, Davis, Anirudh. Option A will be your correct answer. But what about play and sport? Okay, so option A will be your answer. Everyone, quickly mark yourselves how many you have correctly answered. इसके बाद मैं होमवर्क के क्वेश्चन दूंगी, तो फटाफट से मार्क कर लो, देख लो कितने सारे क्वेश्चन आप करेक्टली आंसर किए। और मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ कि हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, जल्दी से इस कोर्स को एनरोल हो जाइएगा। और एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो आपका नेक्स्ट स्टेप है इन ऑर्डर टू अचीव योर ड्रीम, जस्ट इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और हमारे हर रोज इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी होते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस और स्ट्रांगली कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। 7 out of 10 कृष्णा, दैट्स गुड। 9 out of 10, मुझे लगा कि ये पैसेज थोड़ा सा एडवांस लेवल का है एज कम्पेयर टू द लास्ट पैसेज विच वॉज वेरी वेरी इजी। यस, वेरी गुड। 9 out of 10 प्रिया, 10 out of 10 मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट। 8 out of 10 हेमंग, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। ओके गाइज, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर, विच इज योर होमवर्क। सो एवरीवन स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट। मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगी। ओके, सो दिस इज द पैसेज विद द first question. Okay, everyone, take a screenshot jaldi se. First question. Okay, moving on to the second homework question. I'm only giving you one passage, okay, and there are questions, 10 questions there. So fatafat se screenshot le lo. Okay, moving on to the third question. Options for the third blank. Fourth one. Fifth one. Sixth one. Seventh one. Eighth. Options for number 8 blank. Options for the 9th blank. And options for the 10th blank. Okay, take a screenshot. So please solve these questions after the live class ends. So I will be uploading the PDF material of this class inside our app, which is inside the course. You can find our CDS 1 2022 live class and answer key section in both CDS exam online course 2022 and CDS exam OTA online course 2022. So inside this section you will find the live class of today and you'll also find the PDF material of today's live class. So आज के सेशन में जितने भी क्लास हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको उस PDF में मिल जाएगा और लास्ट में ये होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे जहां से आप चेक कर सकते हैं. So to wrap up the session, I'm going to also show you about the test series that we have. So get yourself enrolled into CDS or CDS OTA 2022 mock test series and start practicing your mock test because the exam is just around the corner. And do not forget to use the code warrior10 to get an extra 10% off on any course or test series. So that was it guys. I hope कि आपका practice बहुत अच्छे से जा रहे हैं and I will see you next on Monday. Tomorrow we won't be having any class because it's a Sunday. I want you guys to revise and also start preparing well. So on Monday I will again meet you at 11 a.m. okay, for CDS 1 2022 new topic with a new topic practice session. And today I will meet you for NDA 1 2022 live classes around 5 p.m. okay, so those of you who are preparing for NDA, if you know anyone who's preparing for NDA 1 2022, can please spread the word. अगर आपने इस सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा फटाफट से. And everyone stay tuned for Prashant sir's class which is coming up next after me, which will be on CDS 1 2022 maths live class. Till then everyone, stay tuned with SSB Crack Exams and always stay positive and motivated. Jai Hind.